Hello everyone, welcome to JKSC classes. I am Professor Keyur Sangvi, and in this particular video, we will be continuing with your financial management revision series. In this particular video, my dear friends, we will be covering a part of estimation of working capital chapter only that deals with receivables management part. अगर आप मॉड्यूल उठा के देखो दोस्तों तो मॉड्यूल में रिसीवेबल्स मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ योर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर ओनली। तो आप इसको एक अलग चैप्टर मानो या एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल का पार्ट ही मानो, दैट मीन्स वन एंड द सेम। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद अ क्विक recap और अ रिविजन ऑफ रिसीवेबल्स मैनेजमेंट चैप्टर. It is a very simple chapter and ये chapter में we will be basically covering these 5 points as you can see on the screen. The first point that we will be covering, my dear friends, is introduction. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे समथिंग कॉल्ड एज इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज. उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिस पे एमसीक्यूज डेफिनेटली इंस्टीट्यूट पूछ सकता है. एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फैक्टरिंग. चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं विद दीज 5 पॉइंट्स, स्टार्टिंग फर्स्ट विद इंट्रोडक्शन. अब दोस्तों, इंट्रोडक्शन बेसिकली विल बी कवरिंग दीज 2 पॉइंट्स जो हम डिस्कस करेंगे अभी. फर्स्ट ऑफ ऑल, एज फार एज वी आर कंसर्न्ड विद रिसीवेबल्स या डेटर्स, तो डेटर्स, एज फार एज डेटर्स आर कंसर्न्ड, तो डेटर्स के केस में बेसिकली क्या होता है, डेटर्स ऑलवेज वांट सम एक्स्ट्रा टाइम पीरियड फ्रॉम अस टू मेक द पेमेंट. मतलब हम डेटर्स को गुड्स बेचेंगे एंड दे ऑलवेज वांट सम टाइम पीरियड टू मेक द पेमेंट. अगर एक कंपनी बोलता है कि नहीं, हम सिर्फ कैश सेल्स ही करेंगे, वी विल नॉट सेल गुड्स ऑन क्रेडिट, तो दोस्तों हाई चांसेस है कि वो डेटर है वो आपके कॉम्पिटिटर के पास से वो गुड्स खरीद ले एंड आपसे ना खरीदे, सिंपली बिकॉज यू आर नॉट अलाउिंग द क्रेडिट, यू आर नॉट अलाउिंग द टाइम पीरियड टू द कस्टमर्स. बट हो सकता है आपका कॉम्पिटिटर अच्छा खासा टाइम पीरियड दे रहा हो. सो ऑफ कोर्स किसी को भी अगर पेमेंट करना है तो अगर हमको उसमें टाइम मिलता है, वी ऑलवेज एंजॉय दैट. सो डेटर्स विल ऑलवेज लाइक अ टाइम पेमेंट फ्रॉम यू. ओके, अ टाइम for payment from you basically, so they will always want that you will allow them time period. तो कस्टमर को खुश रखना है तो हमें उनको टाइम देना पड़ेगा. लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि अगर हम उनको टाइम देते हैं तो अवर फंड्स आर ब्लॉक्ड फॉर दैट मच ड्यूरेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 1 अप्रैल को गुड्स बेचा, समझो फर्स्ट सिचुएशन में वी आर मेकिंग कैश सेल्स, तो मेरे को 1 अप्रैल को ही पैसा मिल गया. एम आई राइट? यस. बट अगर मैंने credit sale किया, that means I am not receiving 1 April को ही the amount. So I will be, let us say I gave 2 months credit period. So basically on 31st of May, I'll be receiving the money. Okay, तो customer मेरे को 31st May को payment देगा and I have sold goods on 1 April. Now if you compare the first situation, my dear friends, जब cash sale किया तो on the same day I receive cash, right? And in the second situation I receive cash after 2 months. नाउ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, फर्स्ट सिचुएशन में माय फंड्स आर नॉट ब्लॉक्ड एट ऑल, आई इमीडिएटली रिसीव कैश. तो मैं 1 April को ही आई कैन इन्वेस्ट समवेयर, ओके, इन सम इन्वेस्टमेंट्स, बराबर, एंड फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट्स आई कैन अर्न अ पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न, बराबर, फॉर 2 months. एंड 31st May को आई विल हैव सम अमाउंट, माय प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सम एक्स्ट्रा रिटर्न्स दैट आई विल बी एबल टू जनरेट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट. तो अप टू 31st of May, let us say I get 2000 rupees extra as returns. Okay, but अगर second situation देखें दोस्तों, तो 1 April को we have sold the goods and the customer will be paying to us after 2 months. मतलब 31st May को he will be making the payment and 31st May को I will not be earning anything because customer तो definitely वही amount pay करेगा. So what is happening in the first situation, the company is able to earn 2000 extra just because that customer has made the payment on the same day. लेकिन अगर वही कस्टमर को मैं टाइम पीरियड दूं for 60 days or for 2 months to make the payment, तो my funds are blocked. I am not able to earn that 2000 rupees जो मैंने first situation में कमाया. दोस्तों, this is called as opportunity cost of investment in receivables, also called as carrying cost of debtors और OCIR या फिर COCD, cost of carrying debtors. इसके बहुत सारे नाम हैं, आप alternative names use कर सकते हो. But I hope the concept is clear. The concept is such that if you give time period to your customers, they will make a payment at a later date. तो वो जितना ज्यादा टाइम पीरियड अलाउ करोगे, आपका पैसा उतना ब्लॉक होएगा उसमें, बराबर. लेकिन अगर आपने टाइम पीरियड अलाउ नहीं किया तो सेम डे पे मिल जाएगा, तो वो किधर आप इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न्स कमा सकते हो. जी हाँ.
सो दोस्तों, कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट, अगर मैंने कैश सेल किया, इफ आई डोंट अलाउ क्रेडिट टू द कस्टमर्स, देन द कस्टमर्स विल बेसिकली रन अवे फ्रॉम मी। कस्टमर बोलेगा कि वो कॉम्पिटिटर तो क्रेडिट दे रहा है, टाइम पीरियड दे रहा है, तो आप क्यों नहीं दे रहे, तो हम तो उनसे ही खरीदेंगे। So now the customers are going away from me because I'm not allowing credit to the customers. Okay, but if I allow credit to the customers तो भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मेरा पैसा ब्लॉक होगा। सो दोस्तों, अगर कम क्रेडिट दिया तो भी प्रॉब्लम, लेकिन अगर ज्यादा क्रेडिट दिया तो भी प्रॉब्लम। तो एग्जैक्टली कितना टाइम पीरियड देना चाहिए, हाउ मच क्रेडिट पीरियड शुड बी अलाउड, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर अ फाइनेंशियल मैनेजर। सो दिस इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन माय डियर फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें यही पॉइंट ध्यान में रखना है कि OCIR, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन रिसीवेबल्स, होता क्या है। If you understand this, then you can go through with the introduction part. Okay, that is, if no credit period is given, loss of customers or sales, you can say. अगर higher credit period दिया तो opportunity cost बढ़ जाता है, right? Opportunity cost of investment in receivables, क्योंकि logic ये है कि आपका पैसा ज्यादा टाइम तक ब्लॉक होगा, so you will lose interest or you will lose opportunity to earn some returns on that particular amount. So this is all about introduction, दोस्तों. Moving on to the next point, that is types of credit policies. Types of credit policies में basically there are two types of credit policies, as you can see on your screen. पहला वाला credit policy is called as a stringent or a strict credit policy. दूसरा credit policy is called as a relaxed credit policy. अब पहला वाला कौन सा पॉलिसी होता है, अगर कंपनी ने कस्टमर्स को टाइम पीरियड थोड़ा कम दिया, 20 दिन, 15 दिन, 25 दिन, थोड़ा कम टाइम पीरियड दिया, दैट इज कॉल्ड एज अ स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, वेयर क्रेडिट पीरियड इज अ शॉर्टर ड्यूरेशन। ओके, नाउ अब ऐसे क्रेडिट पीरियड हम कौन से कस्टमर्स को देंगे सर, ये क्रेडिट पीरियड हम कौन से कस्टमर्स को देंगे, दिस क्रेडिट पीरियड विल बी यूजुअली अलाउड टू डाउटफुल कस्टमर्स या फिर नए कस्टमर्स। अगर कोई इंसान नया है, मतलब दिस कस्टमर इज कमिंग टू मी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई डोंट नो हिज पास्ट, आई डोंट नो हिज पेमेंट, हिज क्रेडिबिलिटी, ये कितना टाइम पे करता है, वी डोंट नो एनीथिंग। तो सिंस ही इज अ न्यू कस्टमर, अगर मैंने ज्यादा टाइम पीरियड दे दिया तो बैड डेट्स का चांसेस बढ़ जाएगा, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। आई विल फॉलो अ स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रिंजेंट क्रेडिट पॉलिसी। तो इन दैट केस दोस्तों, दिस इज टू बी यूज्ड, but the opposite of this is a relaxed credit policy. Relaxed credit policy is basically a longer duration. अगर कोई ऐसा कस्टमर है, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जो विच इज नोन टू अस, बेसिकली हम उनको पहचानते हैं अच्छे से, तो वो टाइम पे पैसा दे देता है, so to such customer we will be basically allowing them a longer credit period or a longer duration, and that will be usually followed in case of regular customers. अगर एक simple example दूं दोस्तों, in case in case you watch तारक मेहता का उल्टा चश्मा, in that case Jethalal will always give a relaxed credit policy, or Jethalal will always follow a relaxed credit policy in case of Babita ji, and in case of Bhide, or in case of Popatlal, he will always follow a strict credit policy because chances of bad debts are high. Okay, that is just one simple part, okay, here, but this is all about types of credit policies. Okay, now moving on to the next part, that is evaluation of credit policy, dosto. Evaluation of credit policy may evaluation of credit policy may we will be actually having a format that we will be discussing. Okay, evaluation of credit policy simply tells us कि हमें कितना time period customers को देना चाहिए. I repeat, evaluation of credit policy simply tells us कि हमें कितना time period customers को देना चाहिए. दोस्तों, ये ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में आपको ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में हमेशा एक प्रेजेंट पॉलिसी दिया होगा, एंड दे मे गिव यू वन और टू प्रपोज्ड पॉलिसीज, बराबर। तो प्रेजेंट पॉलिसी को हम इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट करके बेसिकली व्हाट वी विल बी कैलकुलेटिंग इज नेट बेनिफिट्स। अब आप पूछोगे कि सर नेट बेनिफिट्स क्या होता है। दोस्तों, नेट बेनिफिट इज समथिंग ऑन विच यू डिसाइड which credit policy should be followed. I repeat, net benefits is something on the basis which you decide which credit policy should be followed. मतलब सर क्या है नेट बेनिफिट्स, होता क्या है दोस्तों, नेट बेनिफिट्स का सिंपल मीनिंग ये है कि अगर मैंने ये कस्टमर को इतना टाइम पीरियड अलाउ किया, अगर मैंने ये कस्टमर को इतना टाइम पीरियड अलाउ किया, तो क्या मेरे को फायदा है। अगर मेरे को फायदा है तो आई विल सिलेक्ट दैट पॉलिसी, अगर मेरे को फायदा नहीं है तो आई विल रिजेक्ट दैट पॉलिसी। मतलब इफ let us say for example there are two policies, present policy and proposed policy. If there is a present policy of let us say 40 days and proposed policies of 60 days, अगर present policy में हमको net benefits आएगा 40,000 and proposed policy में net benefits आएगा 50,000, now because proposed policy has a higher net benefits we will select proposed policy, बराबर। मतलब we will now start allowing to the customer 60 days credit period instead of 40 days.
आई होप यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों इज द फॉर्मेट। सर इसको इवेल्युएट कैसे करना है? चलो ठीक है, हमको ये समझा कि नेट बेनिफिट्स वगैरह कैलकुलेट करना है, बट सर हाउ आर वी सपोज टू इवेल्युएट द क्रेडिट पॉलिसी? तो दोस्तों दिस इज द फॉर्मेट टू इवेल्युएट क्रेडिट पॉलिसी। We will start with sales under the respective policy. पहला कॉलम आपको दिख रहा होगा present policy. Next दो columns, I've just taken two columns, but there can be more than two. There can be only one also. बराबर proposed policy as you can see on the screen. अब sales से हम start करते हैं, right? We start with our basic income sales. उसके नीचे we actually deduct our total cost. But मेरा total cost is actually variable cost plus fixed cost. Right, total cost is a total of variable and fixed cost, तो वो दोनों लिख के I calculate the total, right? Then from sales I deduct my total cost to get my profits. Once I get that profits, after this I deduct the three specific debtors related expenses, that is bad debts, collection costs and discount allowed. Bad debts we all are aware of. Collection cost is basically the cost incurred to collect the amount from the debtors, and discount allowed is allowed to the debtors to make early payments. तो वो भी एक type of loss या expense ही है हमारे लिए. So all these points, all these three costs you will deduct from the profits that you have arrived earlier, and profits before tax is what you get. So from profits before tax, after that we will be deducting taxation at the given percentage in the question. अगर नहीं दिया तो zero मान के profits before tax itself will be profits after tax. And profits after tax में से we will be deducting the most important part, and that is cost of carrying debtors, also called as opportunity cost of investment in receivables. बराबर COCD आप बोल सकते हो, या तो OCIR बोल सकते हो, या तो OCID भी बोल सकते हो, opportunity cost of investment in debtors. Okay, so when you deduct from profits after tax, आपका COCD या तो OCIR, what we arrive at is net benefits. अब यही net benefits वो ही है जो हम लोग बात कर रहे थे थोड़ी देर के पहले. जो भी पॉलिसी विल गिव अस द हाईएस्ट नेट बेनिफिट्स, वी विल सेलेक्ट दैट. बराबर, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों हमने जो भी पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, दैट इज आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द, rather after evaluating all the policies, we have considered bad debts also, we have considered collection cost also, we have considered discount also, everything we have considered. उसके बाद भी अगर हमें ये पॉलिसी फायदा दे रही है, we will be selecting that particular policy. Now the whole calculation depends on COCD and OCIR. वो बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, the only area where you may go wrong. ओके दोस्तों, COCD एंड OCIR, COCD या तो OCIR आप कैसे कैलकुलेट करोगे? द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल. इट इज टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स multiplied by the collection period divided by either 365 or 360 or 52 or 12 into the rate upon 100. मतलब let us say the total cost is 1 lakh. Okay, so 1 lakh into, let us say collection period is 30 days. So 30 days divided by 365. If no information is given, there are always 365 days in a year. Of course, we will not be considering the leap year part. Okay, generally 365 days in a year, but sometimes the question may specify take 360 days in a year. So of course, अगर question clearly बोल रहा है, we will go with 360 days. अगर question मतलब if we want the answer in weeks, then we will be dividing it by 52. If we want the answer in months, we will be dividing it by 12. तो ये होने के बाद 30 upon let us say 365 into let us say 20% is the rate at which we can generate returns. Okay, OCIR का rate will be specified in the question. So OCIR, that is the rate at which we will be able to generate returns, 20%. So what will happen? The total cost, or you can say the variable cost, or you can say sales multiplied by 30 upon 365 into let us say 20% is the rate, so 20 upon 100. दोस्तों ये जो आंसर आएगा, that will be your OCIR, that you will deduct from profit after tax, and you will arrive at net benefits. I hope this part is clear. Now, one more doubt that can arise here is, sir, कि ये total cost कब लेना है, variable cost कब लेना है, and sales कब लेना है? आपने बीच में और लिखा है, तो हम कौन सा कभी लेंगे? दोस्तों, always remember first priority should be given to total cost. लेकिन अगर by chance fixed cost का कोई information नहीं दिया, तो जो variable cost दिया है, वो variable cost ही हम ले लेंगे. बट कभी कभी कोई कोई क्वेश्चंस में अगर कॉस्ट का ही इंफॉर्मेशन नहीं दिया, then please go with sales. Okay, so first preference to be given to total cost, then the variable cost, and then sales. If total cost calculate करना possible नहीं है, समझो अगर fixed cost नहीं दिया, then definitely your variable cost itself is the total cost, so you will consider your variable cost. लेकिन अगर cost का ही information नहीं दिया, we will go with sales. We will go with sales. I hope this part is clear दोस्तों. तो with this हमारा evaluation of credit policy, how to evaluate the credit policy का format is completed. Okay, I hope till here you guys are understanding and it is very much clear.
The next concept that we will be doing is the concept of average collection period, as you can see on your screen right now. Okay, average collection period का concept भी एकदम simple है. Purposely I have taken an example here so that explanation becomes very simple. चलो दोस्तों, average collection period is on an average terms how much amount is, or rather after how many days the company receives the amount from the debtors. Like just an example, अगर एक example लेना है, let us say credit terms are 2/10 net 30. अब सर इसका मतलब क्या हो गया? What do you mean by 2/10 net 30? दोस्तों 2/10 net 30 simply means कि हमने कस्टमर्स को नॉर्मली 30 डेज का क्रेडिट पीरियड दिया है, बट इफ द कस्टमर इज रेडी टू पे विद इन 10 डेज तो हम उनको 2% डिस्काउंट अलाउ करेंगे. हाउ टू इंटरप्रेट 2/10 net 30? Normal credit period is 30 days, but if the customer is ready to pay within 10 days, then we shall be allowing him 2% discount. ये होता है meaning of 2/10 net 30. बराबर. अब let us say question में दिया है that 60% of the customers will avail the discount and balance 40% customers will pay at the end. बराबर, ये question में दिया है. अब दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ो तो ऑब्वियसली 60% ऑफ द कस्टमर्स अवेल द डिस्काउंट, मतलब 60% ऑफ द कस्टमर्स आर पेइंग एट द एंड ऑफ 10 days, whereas balance 40% of the customers will pay at the end of 30 days. बराबर, ये क्वेश्चन बोल रहा है. नाउ अगर बाई चांस ये स्टेटमेंट ना दिया होता, ओके, एंड समझो क्रेडिट टर्म्स वगैरह कुछ नहीं दिया, अगर डायरेक्टली क्रेडिट पीरियड या कलेक्शन पीरियड क्वेश्चन में दे दिया है 30 days. Now what does that 30 days mean? That 30 days simply means that all the 100% of the customers will be paying at the end of 30 days. बराबर, इसीलिए तभी तो हम बोलते हैं कि हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 30 डेज. लेकिन ये केस में ऐसा नहीं है दोस्तों. यहाँ पे कुछ कस्टमर्स मेरे को जल्दी पे कर रहे हैं, कुछ customers are paying within 10 days, whereas balance some portion of the customers are paying at the end of 30 days. So now those customers which are paying at the end of 10 days, उनके लिए जल्दी पेमेंट आ जाएगा, उनको हम डिस्काउंट भी अलाउ करेंगे. एंड दोज कस्टमर्स हु आर पेइंग आफ्टर 30 डेज, उनको हम कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करेंगे. तो सर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि माय 100% ऑफ द फंड्स आर ब्लॉक्ड फॉर 30 days? द आंसर टू दैट इज नो, because some customers are paying early to you, so you cannot say that all your funds are blocked up to 30 days because you are receiving some proportion at the end of 10 days itself. तो दोस्तों having understood this, now how to consider this? अब इसको average collection period का concept क्या है पहले हम calculate करेंगे, फिर मैं logic बताता हूँ. 60% of the customers will be availing discount, मतलब 60% of the customers will be paying within 10 days, and the balance 40% of the customers will be paying at the end of 30 days. So considering this data, now we will calculate the average collection period. Average collection period का एक simple trick है how to calculate that. How much percentage of customers pay within how many days? Can I say 60% of the customers pay within 10 days? So that will mean 60% of 10 plus 40% of the customers pay within 30 days. बराबर, so that is 40% of 30. So now 60% of 10 will give you 6 days, 40% of 30 will give you 12 days. तो दोस्तों आप बोल सकते हो या टोटल या एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 18 days. Your average collection period is 18 days. This means on an average basis, all the customers make the payment within 18 days. So you can say your 100% of the funds are blocked for 18 days. Or you can say 60% of the funds are blocked for 10 days and balance 40% of the funds will be blocked for 30 days. I hope this part is clear. This is the concept of average collection period. अगर मेरे को जानना है कि on an average मेरे सारे customers कितने दिन में पैसा दे रहे हैं, I cannot say on an average सारे customers 30 days में पैसा दे रहे हैं, नहीं, क्योंकि 30 days तक सिर्फ 40% of the customers are alive as in our books of accounts, right? And बैलेंस 60% ऑफ द कस्टमर्स आर अलाइव ओनली फॉर 10 days, क्योंकि 10 days के बाद उन्होंने पेमेंट कर दिया. तो मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा कि माय 100% ऑफ द फंड्स आर ब्लॉक्ड ओनली फॉर 10 days. मैं ये भी नहीं बोल पाऊंगा 100% ऑफ द फंड्स आर ब्लॉक्ड फॉर 30 days. So I can say my 100% of the funds are blocked for 18 days. That is the concept of average collection period. On an average, all your customers pay at the end of 18 days. बराबर. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. कभी कभी छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं इस पे. ओके, विद दिस आवर 4 कॉन्सेप्ट्स आर ओवर. इफ यू हैव अ लुक एट द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर, दोस्तों ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर बोलो या पॉइंट्स टू बी डिस्कस बोलो, इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज, इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज कलेक्शन पीरियड इज कंप्लीटेड. Now we move on to the last point of this particular chapter, and that is the concept of factoring. That is the concept of factoring. Now let us understand this properly.
ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्टरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत मॉडर्न कॉन्सेप्ट है बराबर. वेरी फ्यू companies practically use this concept or take the benefit of factoring. Okay, because of course there are some limitations also in factoring. Okay, अब होता क्या है फैक्टरिंग के कॉन्सेप्ट में, एक फर्म होता है दैट वी आर गोइंग टू मतलब हम ही एक फर्म है. ओके, एंड वी हैव सोल्ड गुड्स टू द कस्टमर्स. ओके, कस्टमर को गुड्स बेचा, दैट इज द फर्स्ट स्टेप दैट विल हैपन बराबर. कस्टमर हमारे पास आया, हमने उनको गुड्स बेचा, let us say 1 lakh का goods बेचा. Okay, now what will happen, we have also given let us say 3 months का time period to the customer to make the payment. So can I say now my funds are blocked for 3 months बराबर, क्योंकि कस्टमर तो 3 महीने के बाद ही पेमेंट देगा, तो 3 महीने तक my funds are blocked. अब समझो if the firm is in need of cash, अगर हमको पैसा चाहिए अभी, तो what will the firm do, the firm can approach the factor and जितने भी debtors है 1 lakh के, ये 1 लाख के डेटर्स हम फैक्टर को बेच देंगे बराबर. we will sell the debtors to the factor and the factor will purchase these debtors from us बराबर. अब 1 लाख के डेटर्स है तो ऑब्वियसली वो फैक्टर पूरा 1 लाख हमको आज नहीं देगा, राइट. फैक्टर्स डिडक्ट देयर कमीशन बराबर, फैक्टर्स डिडक्ट देयर इंटरेस्ट. ओके, बिकॉज इट इज एज गुड एज अ लोन दैट इज गिवन बाय द फैक्टर टू द फर्म. सो फैक्टर अपना कमीशन चार्ज करेगा, फैक्टर अपना इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा, एंड द फैक्टर ऑल्सो हैज सम फैक्टरिंग रिजर्व बराबर, ड्यू टू सम कॉन्टिजेंसीज. अगर कस्टमर ने टाइम पे पैसा नहीं दिया तो, अगर कस्टमर ने जब पेमेंट किया तब डिस्काउंट मांगा तो ऐसे कॉन्टिजेंसीज भी हो सकते हैं विच द फैक्टर विल इवेंचुअली हैव टू बेयर. So what will the factor do? Factor, to avoid these expenses or to avoid these contingencies, the factor always keeps some amount as reserve. So for example, let us take an example. 1 lakh के debtors, I went to the factor. मेरे पास 1 lakh के debtors थे. Factor please ये purchase कर लो. तो फैक्टर ने क्या बोला, ओके आई विल परचेज बट आई विल चार्ज 5% कमीशन. तो फैक्टर ने 5% कमीशन चार्ज कर लिया, तो 1 लाख का 5%, 5,000 इज गॉन बराबर. तो मैंने बोला चलो ठीक है फैक्टर, अब बैलेंस 95,000 तो दो. तो फैक्टर ने बोला नहीं, हम आपको पूरा रेमिट नहीं कर सकते, हम 10% रिजर्व रखेंगे. नाउ ऑलवेज रिमेंबर माय डियर फ्रेंड्स, रिजर्व इज कैलकुलेटेड ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ डेटर्स. तो हमने जो 1 लाख के डेटर्स लेके गए थे टू द फैक्टर, फैक्टर विल से पहले ही हम 10% रिजर्व रख देंगे. तो व्हाट विल द फैक्टर डू, फैक्टर विल कीप 1 लाख का 10%, 10,000 विद इटसेल्फ. सो 5,000 का कमीशन मारा, 10,000 का रिजर्व भी काट लिया. So now balance 85,000 the factor is ready to give me, but the factor will not give me full 85,000 क्योंकि this is as good as a loan that the factor is giving me. So factor will charge some interest on this loan. And दोस्तों वो interest charge करेगा for the number of days, for हमारे एग्जाम्पल में 3 months बराबर. So he will charge some interest for 3 months and at a particular rate which is also decided in advance. And then the factor जितना भी balance amount आया, let us say 4,000 का interest charge किया, so the balance 81,000 factor will give it to me. Balance 81,000 will be given by the factor to me बराबर, and मेरे को 81,000 मिलेगा against the customers of 1 lakh. But the most important point here दोस्तों is कि फर्म के लिए reserve is not an expense. रिजर्व फैक्टर ने सिर्फ अभी साइड पे रखा है. once the customer makes the payment on time, the factor will release this reserve will come back to the firm. तो मतलब कंपनी के लिए, फर्म के लिए क्या रिजर्व एक खर्चा है? द आंसर इज नो. इट इज जस्ट केप्ट विद द फैक्टर विल बी पेइंग दैट बैक टू द फर्म वंस द कस्टमर मेक्स द पेमेंट. तो फर्म के लिए अब क्या खर्चा है? फर्म के लिए कमीशन एक खर्चा है, डेफिनेटली फर्म के लिए कमीशन एक खर्चा है. फर्म के लिए इंटरेस्ट भी एक खर्चा है, बिकॉज दैट इज व्हाट द फर्म विल हैव टू पे टू द फैक्टर. So eventually after deducting everything, net 81,000 फैक्टर ने हमें दिया for out of 1 lakh rather. Okay, तो 1 lakh के कस्टमर्स बेच के हमको 81,000 आज मिल चुका है. Okay, this is what entire factoring is all about. But now some basic doubt that may arise is कि सर अगर कस्टमर ने पैसा नहीं दिया तो बराबर, अगर वो बैड डेट्स हो गया तो in that case what will happen? तो दोस्तों before we enter into factoring agreement, what happens is वो factoring agreement can be either with recourse agreement or a without recourse agreement. Without recourse बोलो या तो non recourse बोलो, it means the same. तो दोस्तों जब भी हम फर्म बराबर, जब भी हम जो कि फर्म है, हम फैक्टर के पास जाएंगे एंड फैक्टर के साथ अग्रीमेंट करेंगे दैट आई एम सेलिंग द डेटर्स टू यू एंड वो टर्म्स एंड कंडीशंस विल बी स्पेसिफाइड इन द अग्रीमेंट. तो वहां पे द अग्रीमेंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स. वन कैन बी अ विथ रिकोर्स अग्रीमेंट, अनदर वन कैन बी अ विदाउट रिकोर्स अग्रीमेंट. दोस्तों अगर वो विथ रिकोर्स अग्रीमेंट है देन द फर्म विल बेयर द बैड डेट्स. मतलब अगर लास्ट डे पे कस्टमर ने पैसा नहीं दिया फैक्टर को, तो जितना भी पैसा नहीं दिया, जितना भी बैड डेट्स हुआ, that the firm will have to pay to the factor.
eventually the firm has to bear the bad debts. But agar it is a without recourse agreement, in that case the factor himself will bear the bad debts. मतलब अगर कोई loss हुआ, अगर bad debts हुआ, customer ने last day पे पैसा नहीं दिया, in that case the factor will only bear the bad debts. He cannot claim the amount of loss or the amount of bad debts from the firm. So it depends on with recourse या without recourse. दोस्तों MCQ point of view ये type of agreement is very important. They can ask MCQs on this. Okay. After this, after considering this part, the last thing that we are supposed to discuss in factoring only is calculation of effective cost of factoring. दोस्तों effective cost of factoring is also important to calculate. Okay. अब effective cost of factoring क्या होता है? Effective cost of factoring is basically a formula net cost of factoring divided by amount remitted by the factor. अमाउंट रेमिटेड बाय द फैक्टर हमने ऊपर देख लिया कैसे कैलकुलेट किया है, बराबर डेटर्स अंडर फैक्टर 1,00,000 रुपए के डेटर्स हम लेके गए थे, फैक्टरिंग कमीशन माइनस किया, फैक्टरिंग रिजर्व माइनस किया, फैक्टरिंग कमीशन 5,000 था हमारे एग्जांपल में, फैक्टरिंग रिजर्व इज 10,000 इन आवर एग्जांपल, तो 85,000 मिल चुका था, उसके बाद 4,000 का इंटरेस्ट अज्यूम किया था, तो नेट रेमिटेंस वाज 81,000. तो वो जो डिनोमिनेटर है while calculating effective cost of factoring, जो डिनोमिनेटर है that is our net remittance, that is 81,000. अब दोस्तों उसी के सामने हमको कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ता है, राइट? वी इनकर फैक्टरिंग कमीशन, वी इनकर फैक्टरिंग रिजर्व, राइट? तो ये जो कॉस्ट हम इनकर कर रहे हैं दैट इज ऑब्वियसली इंक्लूडेड इन द नेट कॉस्ट ऑफ फैक्टरिंग. बट कभी कभी कैसा होता है, इफ वी एंटर इनटू फैक्टरिंग देयर आर सम कॉस्ट सेविंग्स आल्सो, देयर आर सम बेनिफिट्स आल्सो. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल लेट अस कंसीडर बैड डेट्स. अगर हम बैड डेट्स की बातें करें दोस्तों, तो अगर फर्म फैक्टर के पास नहीं जाता एंड फिर कुछ भी बैड डेट्स होता है तो फर्म ही बेयर करेगा, क्योंकि फैक्टर तो है ही नहीं, तो फर्म का वो लॉस हो गया बैड डेट्स. लेकिन if the firm goes to the factor and enters into a without recourse agreement in which the factor will bear the bad debts, so don't you think this is a benefit to the firm? क्योंकि पहले अगर फैक्टर के पास ना जाए तो बैड डेट्स हम बेयर करेंगे, लेकिन अगर मैं फैक्टर के पास गया तो बैड डेट्स विल बी बोर्न बाय द फैक्टर. So my dear friends, in that case, savings in bad debts will be a benefit that will be arising because we are going into factoring agreement. बराबर. तो because I went into factoring agreement, bad debts are saved. So this is like an additional benefit because of factoring. तो दोस्तों to calculate the net cost of factoring, additional cost of factoring मतलब additional cost will usually include your factoring commission and reserve minus the additional benefits due to factoring. Additional benefits can be savings in bad debts, savings in other administrative expenses जो हम डेटर्स को मैनेज करने के लिए खर्चा करते थे, अब वो भी जरूरी नहीं है क्योंकि डेटर्स को तो हम बेच के आए हैं फैक्टर के पास. So because we enter into factoring, some benefits will also accrue and some extra cost will also be incurred. So net cost of factoring will be those extra costs minus the additional benefit that will give you an effective cost, right? That is the net cost of factoring. That net cost of factoring divided by the amount remitted by the factor will give you, of course, multiplied by 100 will give you the effective cost of factoring. मतलब एक firm factoring agreement में जाके effectively कितना cost bear करता है. That is how much cost you incur divided by how much amount you receive from the factor. तो वो पैसा लेने के लिए आपको इफेक्टिवली कितना खर्चा करना पड़ा, that is called as effective cost of factoring. I hope this point is clear, and with this, my dear friends, we wind up the revision of this particular chapter. So with this, revision of receivables management, also called as debtors management, is over. I hope this video is helpful. Okay, and see you guys in the next video. Thank you so much.